वेलकम टू एवरीवन स्कॉलर स्टडी तरफ समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। तो पूर्व पार्ट रे लॉज ऑफ मोशन रो फोर्स विषय रे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विषय रे भल भाव रे क्लियर रहती भाभी समस्ते बुझी पारथिबो। तो आज आमे जोटा पढ़िया को जाउछे तार परवर्ती टॉपिक CHSE सिलेबस रो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जीवा। तो ता पूर्व फोर्स विषय रे आउट कही तबा जो मन पार्ट 2 और पार्ट 1 देखिनो सो देखिबा ना पार्ट 3 भलो रे बुझी पाइबा। तो पूर्व क्लास रे हमें जाइथिले न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थिला जे एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज डिस्टर्ब an external force। बाह्य बल प्रयोग न हेबा पर्यंत प्रत्येक स्थिर वस्तु स्थिर रहिबो और प्रत्येक गतिशील वस्तु एक सरल रेखा सेमती गति करथिबो। सेकंड नियम रे कहितले न्यूटन जे बाह्य बल गोटे दबा तले गोटे वस्तु को बल प्रयोग करिबा तो सेते बेले से कोन हबो तार चेंज इन मोमेंटम टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। The rate of change of momentum directly proportional to applied force and direction towards the force। force ର direction जुआडे change of momentum टा change in momentum ର rate of change of momentum टा से बटे ही हबो। त momentum विषय कहितले momentum कहले p is equal to mv कोनोसी वस्तुर मास आ वेलोसिटी को प्रोडक्ट कर दिले मल्टीप्लाई कर दिले तार मोमेंटम स्थिर हे जिवो। तो न्यूटन को सेकंड नियम द लॉ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन सेथरे किंतु कोन बाहर करथले ना एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ फोर्स बाहर करथले। द न्यूटन का सेकंड लॉ को अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F is equal to ma। तो मास इनटू एक्सेलरेशन बड़ा वस्तुर मास तो तले मूविंग कोची तार एक्सेलरेशन तो मास और एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई टा होची फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ बाहर करथले द डेफिनेशन ऑफ फोर्स ता बाहरला न्यूटन का सेकंड लॉ माने फोर्स विषय सब पाठला। तापरे गोटे जानथले फोर्स टा तो यूनिट ऑफ फोर्स पढ़िया। तो यूनिट हमर दीटा यूनिट ऑफ फोर्स होची हमर गोटे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होची आ गोटे होची ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होची हमर न्यूटन आ गोटे होची डाइन। एटा हला हमर SI सिस्टम रे एटा हला हमर CGS सिस्टम रे। आ न्यूटन तो जनता न्यूटन रा कोन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एटा हला ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच फोर्स applied 1 kg mass of body when if it is 1 kg mass of body if its acceleration changes to 1 meter per second square then that force applied on the body is 1 newton। the newton kg meter per second square gram centimeter per second square। the gravitational unit of force होची kg force or kg weight out होची gram force और ग्राम वेट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स माने ग्रेविटी ओट ऐड करछि एठी ग्रेविटेशनल फोर्स होछि mg। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स और भाइबो ma। mg ताले होछि केते ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kg फोर्स by 1 kg weight is equal to 9.8 न्यूटन। ये तो फोर्स रा यूनिट इज न्यूटन तो 1 kg फोर्स by 1 kg weight is equal to 9.8 न्यूटन। से बड़ी 1 ग्राम फोर्स by 1 ग्राम weight is equal to 980 डाइन। तो केमते लागे 1 kg फोर्स कहले केते 1 kg फोर्स कहले mg m कहले 1 kg
into 9.8 meter per second square. तो कहते हैं 9.8 kg meter per second square is equal to 9.8 Newton. So 1 kg force is equal to 9.8 Newton. Simply 1 gram force बाहर करिबा 1 gram force by 1 gram weight केन बाहर करिबा समझे mg कहले 1 gram into g कहले 9.8 meter per second square is equal to 1 gram into 9.8 into meter कहले 100 centimeter 100 centimeter per second square is equal to 1 gram into 980 centimeter per second square is equal to into करते आसीबा 980 gram centimeter per second square is equal to 980 डाइन. तो important point मन रखो 1 kg force is equal to 9.8 Newton. 1 gram force is equal to 980 डाइन. So next ଯିବା relation between Newton and dyne. The relation between Newton and dyne. देखो 1 Newton is equal to 1 kg into 1 meter per second square is equal to 10 to the power 3 gram into 10 to the power 2 centimeter. 1 meter is 10 to the power 2 centimeter per second square is equal to 10 to the power 5 gram centimeter per second square is equal to 10 to the power 5 gram centimeter per second square होची डाइन. So 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. The relation between Newton and dyne. So तापर जिबा difference between absolute unity of force, absolute unity of force and gravitational unity of force. Gravitational unit of force. Absolute unity of force और gravitational unity of force विषय different का. मानो तो absolute unity of force is remain constant all over the world, throughout the world. But gravitational unity of force varies place to place because gravitational unity of force depends upon g, acceleration due to gravity. So write down absolute unity of force, absolute unity of force remain same throughout the world, but gravitational units of force varies from place to place due to depends upon g, gravitational unit. because g सब जगह समान न थाए, g always varies place to place. कारण मैं अर्थ रो सेंटर रे गोटे मे दुई मेरु रे गोटे
g ର ମୂଲ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଥାଏ। g ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ g ର ମୂଲ୍ୟ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ହେଉଛି ତ mg ଟା ସେ ଅନୁସାରେ n ତ ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ବଟ୍ g ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଅନୁସାରେ mg ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତେଣୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଫୋର୍ସ ସବୁବେଳେ ma ଇଏ ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଆର୍ଥ। ତ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଆଣ୍ଡ ଡାଇନ୍ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମ। ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମ of Newton's second law। Vector form जो है Newton's second law। In terms of rectangular components of force अपन पढ़ ले momentum and acceleration। In terms of force, momentum and acceleration, vector can be represented as force कम करिए वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं fx I cap plus fy j cap यूनिट वेक्टर I cap j cap कुछ ना स्केलर वेक्टर है fz k cap सही करिए एवं and momentum p किन करिए px I cap py j cap plus pz k cap। Again acceleration ax I cap plus ay j cap plus az k cap। Now according to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, Newton's second law of motion कौन जान ले F is equal to dphi by dt, change of rate of change of momentum, small change in momentum, so dphi by dt, F is equal to dphi by dt is equal to और जानते ले ma। एटा न्यूटन का सेकंड लॉ रु पूर्व क्लास रे बाहर तला। तो वर्तमान देखो F is equal to dphi by dt is equal to ma बाहर तला। तो now find out the वर्तमान वैल्यू पुट करते सब तरह F कौन करते ले fx I cap plus fy j cap plus fz k cap is equal to d by dt p ର value put करा px I cap plus py j cap plus pz k cap is equal to m whole into ax I cap plus ay j cap plus az k cap। ओके डबल देखो this implies that
fx I cap plus fy j cap plus fz k cap is equal to into कर दिया d by dt px I cap plus d by dt py j cap plus d by dt pz k cap is equal to eta max I cap plus may j cap plus maz k cap ओके प्रथम देखो तीनटा इक्वेशन को इक्वेटिंग कर दबा नाउ equating all equations we get ये तीनटा टर्म ये भी तीनटा टर्म ये भी तीनटा टर्म सब टर्म्स इक्वल अछि तार फर्स्ट टर्म तीनटा इक्वेशन रो तीनटा टर्म इक्वल अछि तार फर्स्ट टर्म से तार फर्स्ट टर्म इक्वल आर फर्स्ट टर्म इक्वल तो लिखि दबा fx I cap is equal to आर कोन d by dt px I cap is equal to max I cap और कोन पाइबा fy I cap is equal to d by dt py j cap is equal to may j cap और कोन पाइबा and fz k cap is equal to d by dt pz k cap is equal to m az k cap एट कौन पाएगा I cap cancel तो कौन पाएगा टी fx is equal to d by dt px is equal to max एतर कौन पाएगा j cap cancel है जो पाएगा fy is equal to d by dt py is equal to may एतर कौन पाएगा k cap cancel है जो fz is equal to d by dt pz is equal to maz. So this is the vector form of Newton's second law. Okay. बर्तमान जीवा प्रॉब्लम न्यूटन 7 लॉ बेसिस हमें किसी प्रॉब्लम जीवा तो प्रॉब्लम वन देखिए a car of mass 1000 kg is moving with a velocity 10 meter per second and acted upon by a forward force of 1000 newton due to engine and retarding force of 500 newton due to friction. What will be its velocity after 10 seconds? किसी कुछ कर लेंगे देखो a car of mass 1000 kg गोटे कार रो मास होची 1000 kg is moving with a velocity 10 meter per second square कार पे जाउची तार मास होची 1000 kg तो मूविंग विथ वेलोसिटी केते वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड पे कार टा जाउची and acted upon a forward force में काटा एटे जाउची कंटिन्यू चलची का जाउची तो फोर्स केते फोर्स जाउची ना 1000 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स एते एपडोड जाउची फॉरवर्ड फोर्स जोटा होची 1000 न्यूटन तो ड्यू टू इंजन फॉरवर्ड फोर्स कले काटा केमे इंजन तो इंजन जो फोर्स दोची इंजन दोची 1000 न्यूटन फोर्स रे कार जाउची बट रिटार्डिंग फोर्स पछु को दोची जेहेतु तले कार आगु को जाउची तो पछु गोटे दोची ड्यू टू फ्रिक्शन गोटे पछु दोची पछु गोटे फोर्स दोची 500 न्यूटन रफ रोड हेतिबो तो 500 न्यूटन दोची इंजन दोची 1000 न्यूटन फोर्स आउ बैकवर्ड बाय रिटार्डेशन फोर्स माने बैक करची पछु आसी 500 न्यूटन फ्रिक्शन द्वारा जाउची
बर्तमान बाहर करें व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड तो जाईची तो रास्ता रे जाउची तो 10 सेकंड आफ्टर 10 सेकंड 10 सेकंड ପରେ तार वेलोसिटी केते हेबो अर्थात फाइनल वेलोसिटी केते हेबो इनिशियल वेलोसिटी देछि केते वेलोसिटी जाउची 10 मीटर पर सेकंड रे जाउची इंजन 1000 न्यूटन फोर्स पकाउची तापरे रिटार्डिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स पकाउची 500 न्यूटन तो वर्तमान 10 सेकंड पर तार फाइनल वेलोसिटी केते हेबो तो प्रॉब्लम को पूर्व प्रथम आग डाटा लिखि दियो कौन जाउची कौन देछि ए कार ऑफ मास सॉल्यूशन कार ऑफ मास 1000 kg तो m इज mass of car m is equal to 1000 kg अब कौन देछि मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड तो एडी u इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 10 मीटर पर सेकंड अब कौन देछि बाय फॉरवर्ड फोर्स 1000 न्यूटन तो फॉरवर्ड फोर्स फॉर ड्यू टू इंजन छा फॉरवर्ड फोर्स हला 1000 न्यूटन ओके तो बैकवर्ड फोर्स रिटार्डिंग फोर्स हमर होछि केते 500 न्यूटन तो 1000 न्यूटन फोर्स इंजन दोछि रिटार्डिंग फोर्स फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स दोछि 500 न्यूटन तले कारटा केते फोर्स जाउछि देखुंती नेट फोर्स केते हबो 1000 न्यूटन माइनस 500 न्यूटन इज इक्वल टू 500 न्यूटन इंजन दोछि 1000 न्यूटन पछको आछि 500 न्यूटन अपोज करछि तले कारटा केते फोर्स रे जाउछि 500 न्यूटन दैट इज F इज इक्वल टू हमरला 500 न्यूटन तो टाइम देछि केते 10 सेकंड हमको बाहर करबा अछि v m देछि u देछि f देछि t देछि v बाहर करिया तो केम बाहर करिया जनरली प्रथम a टा बाहर कर दियो एक्सेलरेशन बाहर कर दियो तापर v इज इक्वल टू u प्लस at इज इक्वल टू v v बाहर पड़ियो तो फर्स्ट एक्सेलरेशन बाहर करो हम लिखबो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन f is equal to ma this implies that a is equal to f by 10 तो f टा केते नेट फोर्स हमर भाला केते 500 बाय m टा होछि केते 1000 तो आसीबो 0.5 1 by 2 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो a बाहरी पइला v देछि v तो बाहरीबो u देछि a बाहरला तो t बाहरी पड़ियो t देछि हमर बाहर पड़ियो v linear equation कोन बाहरते v is equal to u plus at फर्स्ट इक्वेशन linear equation गति संबंधी मोशन इक्वेशन जोटा बाहर कर लेखा v is equal to u plus at तो v u केते u होछि हमर 0 इनिशियल वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड a होछि केते a तो बाहर लागेते 0.5 into t टा केते t होछि 10 केते हो 10 plus 0.5 into 10 as well 5 15 meter so what will be its velocity after 10 second 15 meter तो 10 सेकंड पर 15 मीटर अतिक्रम ओके तो प्रॉब्लम 1 गला तो हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम को जिबा the next problem a bullet of mass 0.04 kg moving with velocity 90 meter per second enters a heavy wooden block and it stops after a distance of 60 centimeter what is the average resistive force exerted by a block on the bullet solution for a bullet jar mass होछि 0.04 kg मूविंग विथ वेलोसिटी गन से बाहर छि तो बहुत स्पीड जाई छि 90 मीटर पर सेकंड रे जाउ छि जाई कि कोन छि ओटा वुडन ब्लॉक रे माड होई छि तो माड होला परे सेठी से बुलेट रही जाई छि तमने फाइनल वेलोसिटी ता 0 हो जाई छि आफ्टर ए डिस्टेंस तो केते सेंटीमीटर जाई छि 60 सेंटीमीटर ए टू बुलेट ता बाहरला एटी ओटा हेवी ब्लॉक रे माड होला
माड होगी रही जाइए आती डिस्टेंस होची हमर 60 सेंटीमीटर एटा हला मास ऑफ बुलेट 0.04 केजी आर वेलोसिटी केते एटी यू होची केते हमर 90 मीटर पर सेकंड एटी v टा माड होगी रही जाइए तो जेहेतु रही जाइए तर फाइनल वेलोसिटी टा होची 0 एटी होती 60 सेंटीमीटर टाइम टाइम दिस दे नलो चलो सॉल्यूशन करिया को लेखिया एटा कोन देछि मास ऑफ बुलेट mass of bullet is equal to 0.04 kg तो kg is kg रखियो आ कोन देछि मूविंग विथ वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड एटी कोन देछि तो m is equal to 0.04 kg u is equal to 90 मीटर पर सेकंड देछि v is equal to 0 जे रही जाई सेठी 0 s is equal to केते डिस्टेंस जाई 60 60 सेंटीमीटर तापर बाहर करिया केते जो माड हेची ब्लॉक ये ब्लॉक ता बड़ ब्लॉक ता ये ताकू केते फोर्स देची रेजिस्टिव फोर्स ता रिटार्डेशन फोर्स तो केते हबो बाहर करो प्रथम ए बाहर कर दियो तापर f ता बाहर कर दवा m ओके तो वर्तमान बाहर करिबा as we know न्यूटन का द्वितीय गति सम तृतीय गति समीकरण v square is equal to u square plus 2as प्रथम इक्वेशन थिला v is equal to काइनेमेटिक्स प्रथम इक्वेशन था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब v is equal to u plus at न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन मोशन इक्वेशन जोटा s is equal to ut plus half at square v square is equal to u square plus 2as a तीनटा इक्वेशन तो v square is equal to 2a v square is equal to u square plus 2as राइट हमरा बाहर कर दियो 2as के तह बैठी v square minus u square is equal to 2as तो a के तह बैठी v square minus u square by 2s तो पके का मूल्य v कहले एटी 0 u कहले केते एटी 90 द स्क्वायर 2 into साइड 60 सेमी अछि तो आपका मीटर कर दिबा 60 by 100 मीटर तो केते हबो 3 by 5 मीटर तो एटा केते हे जो माइनस एतिकी बाय 3 by 5 तो 5 टा ऊपर पळे आसीबो तळे जो 6 तो एतो को हम दे कटाकटी कदी मीटर हला एतो जदि हम कटाकटी करतो जे आसी माइनस 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ए रा मूल्य वर्तमान पाई गले एटा हला रिटार्डिंग एक्सेलरेशन पाई गले तो वर्तमान फोर्स बाहर करिया तो ए पाई गले तो वर्तमान फोर्स बाहर कर दो m a फोर्स लगे त हमर m into a मास केते हेची 0.04 into -6750 तो आपको 4 by 100 into -6750 0 0 कटी गला हमचा कोडिए 0 270 न्यूटन आसे तो फोर्स हला तो माइनस आसे माइनस इंडिकेट ब्लॉक टा आपको फोर्स दोस नेगेटिव फोर्स दोस तो सही तो प्रॉब्लम इटा सरी गला तासता न्यूटन का सेकंड नियम लॉ सब फिनिशिंग ओके तो वर्तमान गोटे भल पार्ट ऊपर बुझा इम्पल्स इम्पल्स
इम्पल्स विषय पढ़ा इम्पल्स कौन इम्पल्स होची कौन मन तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होची चेंज इन मोमेंटम हमर मोमेंटम जो चेंज होची सेटा ही इम्पल्स तमन अर्थात मोमेंटम रो यूनिट जहा इम्पल्स रो यूनिट से मोमेंटम रो डायमेंशन जहा इम्पल्स रे भी डायमेंशन तो चेंज इन मोमेंटम टा होची इम्पल्स तो कहबा कि काहे कि इम्पल्स मोमेंटम अलग ना दिया गला ना सेम किंतर प्रोसेस टा टिके अलग होची इम्पल्स कोन मोमेंटम टा कोन पड़ले मास इनटू वेलोसिटी गोटे वस्तु रो गोटे बॉडी रो मास आ केते स्पीड रे जाउची वेलोसिटी तो मास और वेलोसिटी को इनटू करले तार हम मोमेंटम बाहर करथले बट आर यूनिट जे हाबो से हाबो किंतु इम्पल्स रे कोन होची से होनी आंसर अवश्य का बाहर करे किंतु से होनी इम्पल्स रे होची कोन a large force acted on acted upon a body in a short time कम समय पे गोटे लार्ज फोर्स गोटे विराट बड़ फोर्स एग्जांपल देले जानिबो क्रिकेट खेलतिबो सपोज गोटे बॉलर बॉलिंग करछि फर्स्ट प्लेयर इंडिया रे बॉलिंग चलछि क्रिकेट हाजर बॉलिंग कला एपटे हमर अभिषेक शर्मा बैटिंग करछि तो जब बॉल पकोछि जेतले गोटे 6 मारे चाहूछि तो बहुत जोरे फोर्स टा प्रयोग करछि जेतले केते समय बॉल बाजछि केते समय जस्ट स्मॉल टाइम तो से स्मॉल टाइम जेतले बाजछि कि बॉल टा जाउछि बाउंड्री बाहर तो लार्ज फोर्स कराला बैट द्वारा फोर्स टा दिया गला बट कहा को बॉल ऊपर पड़ला बट केते समय पे कम समय पे फोर्स तो से समय का कहै हमें इंपल्स चेंज इन मोमेंटम तो बुझिला the force exerted by the bat to ball ये ଗୋଟେ एग्जांपल लेबा हम तळे हैमर जे तळे कंटा को बाडबोचे तो जोरे बाडबोचे जोरे फोर्स दिया गला किंतु केते समय पे कंटा जो पड़ला बहुत स्मॉल टाइम पे तो ता कहंती इंपल्स ओके ताके लेखले जानि परिबो कोन इंपल्स कहली a large force acted upon a body for a short time which it produces a definite change in momentum okay momentum टा गोटे प्रोड्यूस करबा definite change in momentum ता तबले स्थिर रखि दियो गोटे डेफिनेट मोमेंटम पई गोटे मोमेंटम ता जतळ होची दिका सेम रहतो मोमेंटम ता सेम करिया पे एक लार्ज फोर्स गोटे स्मॉल टाइम पे गोटे वस्तु पे अप्लाई करतो तो लिखिबा डेफिनेशन a large force acts upon a body for a short time which produce a definitely which produce a finite change in momentum is called impulsive force okay ताकू क्वाड्रेट डिनोट करिया it is denoted by z okay थर्ड रे कोन करिया it has तो j is equal to बले करी impulse is equal to f into t short time मिले delta dt it has units न्यूटन into f यूनिट होची न्यूटन s होची न्यूटन into second ns okay v it has dimension f dimension होची कोन m lt minus 2 into t तो केता हो m lt minus 1 एम रहने के चेंज इन मोमेंट वाला कोन k is equal to mv आर कोन m आर वाला lt minus 1 तो होनी मोमेंटम रो डायमेंशन दे आर भी डायमेंशन से तो इट हैज डायमेंशन
तो इम्पल्स से बुझी पालो when a large force acts on a body for a very small time just short time कम समय पई जते बडे गोटे फोर्स कोनोसी बॉडी ऊपर एक्ट कला तो सेते बेले हम कहला इम्पल्स क्रिएट होला कहंती इम्पल्सिव फोर्स बोली कहबा एठी देखो इम्पल्स इज इक्वल टू ft एठी इम्पल्स ता यदि समान रहिबो f टा केते हबो j by t t सहित इनवर्सली वैरिज करिवो तमे जते समयटा बढ़िबो तते इम्पल्सिव फोर्स टा कम हेबो सेति पई क्रिकेट खेल में जतरे आनंदी हाथ बॉल ऊपर पडुथिबो हाथटा उठे तळो ले जाय कारण एठी जतरे पडिबो साइंस से तो लार्ज फोर्स गोटे स्मॉल जगह रे एक्ट कला तो एठी फोर्स टा अधिक पडिला तो टाइम टा यदि बढ़ाई देबा ठीके तो फोर्स टा चेंज इन मोमेंटम टा समान सेम चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम टा सेम करिया पई यदि एठी इम्पल्स टा सेम रहला कांस्टेंट रहला ए बटा टी ऊपर इनवर्सली वैरिज कला टाइम जते बढ़िबो इम्पल्सिव फोर्स टा से कोन आजिबो कम हो तेणु टाइम टा सदाले जते टाइम टा कम रहइबो फोर्स टा तापर सेते अधिक बढ़िबो ओके घंटा बाडेबो एटा हार्ट जते नथिबाटा पूरा स्लो थिबो तापर फोर्स टा शीघ्र टाइम टा बढ़ी गला तापर फोर्स टा कमी जिवो जदि ए जगहटा अधिक हार्ड अछि तापर फोर्स टा अधिक पड़िबो टाइम टा कम हो जाउछि तो बर्तमान कॉपी कर दिया डिराइव करिया let us consider force F acts upon a body for a small time dt प्रथम को तले फोर्स टा गोटे बॉडी ऊपर पड़िबो स्मॉल टाइम dt ऊपर पड़िबो तापर इंपल्स टा निश्चित भाव स्मॉल हबो तो एठी हबो इंपल्स पहले हम जे एटा कोन हो डीजे डांस नो डीजे स्मॉल इंपल्स हबो इज इक्वल टू f dt force into time that is impulse and that is change in momentum जहाँ impulse बेस है dg is equal to f dt तो हमें कौन करिया एटा कौन करिया टाइम सहित हमें ताको इंटीग्रेशन कर दे हम dj रो ओरिजिनल इंपल्स dj माने को बहुत स्मॉल इंपल्स एटा स्मॉल टाइम रहला प्रकृत इंपल्स पाइ गेले हमको ताको इंटीग्रेशन करिया पड़ियो तो इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़िथिबो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जानिथिबो तो करि पारो वाले इंटीग्रेशन के तौर करिबा तो बटन देखो आकु कौन करिया नाउ integrating both sides with respect to t टा में नबा को टू सपोज t टा नबा t1 to t2 सपोज t1 to t2 इंटीग्रेशन करे टाइम टा t1 रो t2 भीतर नबा तब का j इज इक्वल केता हबो इंटीग्रेशन ऑफ dj रो बाहरिबो j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt where time varies from t1 to t2 तो इज इक्वल टू केते हबो तक बाहर पे आसीबो कांस्टेंट आसीबो इंटीग्रेशन ऑफ dt from t1 to t2 is equal to f dt रा इंटीग्रेशन होची t varies from t1 to t2 f and as equal t2 minus t1 इंटीग्रेशन यदि गोटे t टा रो varies थियो ताले t2 minus t1 ही हबो इंटीग्रेशन प्रो भालो जानिबो खाली मन रखिते f t2 is equal to f delta t where delta t is equal to t2 minus t1 delta t very small time तो हम कौन जान ले
impulse जानले F delta T ओके तो वर्तमान तो impulse रो जान देले आउट में तो impulse momentum theorem ता मन देले theorem ता मन लगितो impulse J is equal to P2 minus P1 theorem ता मन लगितो एटा हमर नेक्स्ट पार्ट रे पढिबा हला तापरे impulse basics गुडा प्रॉब्लम करिबा तापरे हमर जीवा कोठी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आज पे एते की टेक केयर ओके